हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, पोएम बाय एमिली डिकिंसन। हम इस पोएम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो और फिर इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे आना। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको हिंदी में भी पहले डिस्कस करूँ और फिर इंग्लिश में। मैं इसको इंग्लिश में ही डिस्कस करूँगा और जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ मेरे को बताना चाहिए थोड़ा बहुत हिंदी में, तो मैं वहाँ पे बता दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक तो टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आपका भी जो है इंटरेस्ट कम हो जाता है उस वीडियो को कि यार ये तो बहुत लंबी वीडियो है, कि क्यों ही देखना है इसको। तो और आप लोग बीच में ही छोड़ देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपने अगर 20 मिनट की वीडियो है तो आपने उसे 10 मिनट देखा तो आपको आधी चीज़ें समझ आएंगी और आधी नहीं आएंगी, क्योंकि अब आधी चीज़ें में तो हम ऐसी बात करते रहते हैं, बकवास ही चलती रहती है। लेकिन आपको पूरा देखना है उस वीडियो को, तो इसलिए मैं अब आजकल मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ज़्यादा मैं अब आजकल बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है अ पोएम ऑन द एक्सट्रीमिटी ऑफ पेन। मतलब कि पोएम जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जो कंडीशन होती है ना पेन की, उस बारे में लिखी गई है, उसको दर्शाती है। दिस इज़ वन ऑफ एमिली डिकिंसन्स पोएम ऑन द एक्सट्रीमिटी ऑफ पेन। इट इज़ नॉट फिजिकल पेन बट अ साइकिक और द पेन ऑफ स्पिरिचुअल डेथ of a very sensitive mind. Many outside things and the inner conflict conspire to agitate a sensitive person's mind, brooding over the existence of life and fear of death and mystery of life and birth, and about all things which the religion teaches and the social life gives us. The sensitive person feels the painful experience of funeral or all things associated with it, then intense or excessive agony things make the poetic mind into imagination to the limit of trance and mystic vision, a plunge into the mystery of approaching death. डिस्क्रिप्शन जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूनरल इज़ अ वेरी विविड एंड इम्प्रेसिव, though the poem is expressive of mystic vision or a rational man going into a trance. That description of funeral is very vivid and impressive. Mourners kept trading to and fro, and when they were seated, they heard during service the beating of drums. A coffin box had been lifted to be carried to cremation ground. The boots of lead of the mourners are being heard. The bells are heard ringing. The mourners are seen to be silent and solitary, and ultimately the coffin box is dropped down into the grave, and thus is divided the world of the living and the dead. Poem is simple and lyrical. The poem is a lyric which naturally expresses a single feeling with intensity. Here, the speaker is feeling a funeral in her brain. The language of the poem is simple and lyrical, as it should be. The repetition of certain words, like beating, makes it rhythmical, pictorial, and full of images. The poem is descriptive and narrative as well, but it is pictorial and full of images. We visualize mourners striding to and fro. We imagine them to be seated round the dead body. We see coffin box being lifted and carried to the cremation ground with the pall bearers marching to the graveyard. We can imagine to hear the beating of drum, the lifting of coffin box, the sound from the mourners' boots of lead, and ringing the bell.
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, सॉरी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है यूज़ ऑफ वर्ड्स विद द कैपिटल लेटर्स. The poetess uses words with the capital letters to make them suggesting funeral, brain, mourners, service, ड्रम. इन सभी में जो है कैपिटल लेटर का यूज़ हुआ है. माइंड, बॉक्स, सोल्स, बूट्स ऑफ लेड, बेल, बीइंग, फार, साइलेंस, रेस, सॉलिटरी, ब्लैंक, रीज़न, वर्ल्ड, फिनिश. सो इन सब में जो है ना कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है पोएट ने. अब मिस्टिक पोएम, ये जो है एक मिस्टिकल पोएम है, मिस्टिक पोएम है. यूज़ ऑफ वर्ड्स and experience presented make the poem a mystic poem. Though the words are simple, they suggest something more painful, trance-like and mystic experience. The words like funeral, mourners, service, drum, box, silence, solitary, boots of lead, a creak across my soul, dragged to the experience of pain. Sense was breaking through my mind, was growing benumbed. A creak across my soul, then space and being put an air. Suggest a journey towards trance space. All the heavens were a bell, silence, solitary point to the mystic experience. नेक्स्ट एंड लास्ट जो हेडिंग है, लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है नो रेगुलर राइम और स्कीम. इसमें कोई भी रेगुलर राइमिंग और स्कीम नहीं है, ठीक है. Though there is no regular rhyme scheme, there is also rhyming somewhere. To and fro rhymes with through, drums rhymes with numb, tell rhymes with bell, and here rhymes with bear. As the poet's mental journey is moving towards trance and mystic experience, rhyming falters. So far as the syllables in each line are concerned, they vary. The first line has 9 syllables, while the second line has 7 syllables. No line has got few or than 6 syllables. Similarly, they are not more than 9 syllables in any lines. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली नई वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो 2-3 बार देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. और अपने नोट्स जो है बनाते रहना, क्योंकि जो है फिर काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठा, क्योंकि आपके कंफ्यूज हो जाओगे, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई हमने इस पोएम में ये पढ़ा था, इस पोएम में ये पढ़ा था. अपने नोट्स बनाते रहोगे तो आपको बार बार जो है वीडियोस को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप जो है एक ही बार आप उसको जो है 1-2 बार में आपको वो समझ आ जाएगी. नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फिर उस टाइम पे कवर नहीं कर पाते हैं, खिचड़ी बन जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, वो टीचर को गाली देने लग जाते हैं, टीचर को अब्यूज़ करने लग जाते हैं कि यार इसने तो ऐसा पढ़ाया था, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये वो करके. तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप डे 1 से वीडियोस को देखो और उसका जो है समझो, उसको क्या उसको उसमें बताया गया है, और अपने नोट्स जो है बनाते रहो, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना पड़े. और जिस पोएम का मुझे लगा कि इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या आएगा या ऐसे आ सकता है, उस पोएम का मैंने करा दिया. और हर पोएम का नहीं कराया मैंने, क्योंकि जो है देखो हर पोएम का आता भी नहीं है. किसी पोएम का तो ऐसा होता है कि मतलब बस इसी पोएम में से आपको एग्जामिनर देता रहेगा, घुमा फिर आगे, कभी उसका थीम बोलेगा, कभी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बोलेगा, कभी बोलेगा कि अबाउट द ऑथर लिख दो, या या तो मेटाफिजिकल पोएट लिख देगा, या नेचर के बारे में बोल देगा, कुछ भी आपको आ सकता है. तो इस वजह से मैंने आपको जो है बस सिलेक्टेड पोएम्स का, जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, सिलेक्टेड पोएम्स हैं, उसी का मैंने आपको सब आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि इसका थीम क्या हो सकता है. अब आप बाकी गूगल है, आप उस पर सर्च करो आप, ठीक है, लेकिन आप इन वीडियोस को भी देख के समझो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. तो चलो, अब काफ़ी टाइम इसका जो है हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली नई वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.